everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है फर्स्ट क्लास ट्रेन दिल्ली टू आगरा गतिमान एक्सप्रेस AC फर्स्ट क्लास और इनके चैनल का नेम है निकोल एंड माइको। इस वीडियो की सजेशन थी कि गतिमान एक्सप्रेस पर रिएक्शन किया जाए। आज हम लोग ये वीडियो वॉच करने वाले हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। Good morning, everyone. The day has finally come for us to leave Delhi. Today we're headed over to Agra, which is the city where the Taj Mahal is in. And to get there, we're going to take our first ever train here in India. We're pretty nervous because the trains here are pretty notorious for being a little rough around the edges. But we're also really excited to check it out for ourselves finally. So we're saying goodbye to our tiny little apartment here in Delhi, and we are off to the train station. Bye-bye. Alright, we made it. Too much hassle? Turns out there's TVs to tell us if our train's coming. At present it says our train is still on time, but the three that are like updated are all late, so I don't have high hopes. Alrighty, not too bad. It's busy, but you know, it's India. Nothing really different than where we have been over the past few days. To be honest, I'm quite surprised that we have TVs here in the first place to show us where to go. So we are in like 2 seconds, we already knew what platform to be on. I think it's a win. Yeah, I agree. I'm pretty sure we go this way. Wow, this is big. There are so many train tracks here. This is a giant station. I think what's really handy and what we've been finding in India so far is that there's a lot of English signage. So it's not really that hard to get lost. Hard to get lost? Not that hard It's to hard to be get lost. hard to get lost. I think that's the train. Is it here this early? So I feel like that was a little bit too easy because I think this is our train already, although it's like 30 minutes early. So we're just gonna double check with somebody that this is in fact the right train, because we see people boarding and if this is the right train, we can board now, then that'd be excellent. Okay, next coach. This is the right train. This felt way too simple. I was promised headaches and unfortunate circumstances and delays and not fun. But this is great. And there just wasn't a lot of option left, so we're in the like executive class. There's like the chair seats, they're not like the sleepers, the lie downs. I'll give you a little seat tour. So in front of me I have a table with 2 little pockets for your drink, which I don't think are actually going to help it to not fall out, but they're there. A drink holder, that's for a water bottle. We have feet holders, which are actually really nice. Oh, and they go up. Oh, and down. Oops. Okay, I've broken mine. That's good. There's a ton of legroom. Like, look at me. Okay, I'm only like 5'3", 5'4", but seriously, look. That's amazing. Obviously a window with a shade, and you can see the humidity build up. The temperature here is super nice. Definitely air conditioned. And we have really comfy chairs. We each have 2 armrests. Space for our luggage, of course. We put our backpacks above us. Do these work? Wow, I did not think those were gonna work. You blinded me. Oh, and look at this. An outlet. One last thing I forgot to show you. A net for all your goodies, for all your snacks. Also, when we booked this ticket, you have the option to include food in your ticket. We opted out, so we will not be getting food on this journey. It's only an hour and a half. We don't need a meal, but it is an option to get your food provided to you on the train. I mean, Nicole says we don't need a meal, but that's only because she packed like enough snacks for 4 people. That's not true. I will show you my snacks. I did not overpack snacks today, thank you very much. Look. Snack tour. It's a very quick snack tour. This is a chocolate almond protein granola bar. Wait. And another
yogurt and berry and antioxidant granola bar. This is all my snacks. Don't make fun of me. I held back. I have reservation sometimes. No reservation. Restraint. I have restraint sometimes. I think I found something else. Oh, look at that. They recline. This is fancy. Oh man, if only I hadn't broke my footstool. Yeah, these are actually really comfy seats. I mean, they are like the top tier for this train. So you kind of have to expect some level of comfort. But so far, I'm really impressed. I'm so impressed. Also, you guys want to see my snacks? There we go. I got इनके पास अपने snacks हैं. coffee mate. Coffee. Nicole and I love her coffee. We love usually putting creamer in it, but since it's hard to find creamer, we just put like this coffee mate. And we didn't know when we'll be able to get a hold of Coffee Mate again. Yeah, we found it in Delhi, and we're like, when's the next time we're gonna find Coffee Mate? So we got the biggest pack and like filled it to the brim with some more that we had lying around. So this is my snack. Yeah. Ew, that's not true. He has granola bars. I bought him granola bars too. A few seconds later. Luca's making fun of me for eating already. The train hasn't even left the station. Hungry lady. We're already diving into snack 1 of 2. You'd think I didn't have breakfast, but I had breakfast and coffee. Just like that, we're off. It was on time. We left on time. So impressed. Hey, we got a free water and a cup. That's pretty cool. Nicole's already reading her paper. Very seasoned train goer there. Food king. मतलब ये options है कि आप ले सकते हो नहीं भी ले सकते अपनी टिकट में. तो उन्होंने ये option लिया है. I do not think I will eat it yet, in case it will be taken away from me. खाया नहीं lunch Thank you so much. खाने में मिला क्या? Alright, he took our food away. Just kind of sad because that actually looked Trays pretty good. वापस So भी it's an लेके extra जाते हैं भाई. 250 rupees यानी $3 for a meal US. like that on the train. Meal add होगा I ticket think में I'll ना. stick with my snacks, especially because it's only like an hour and a half. अच्छा 250 rupees आप लोग बताइएगा just meal add करवाने के हैं या total इसका वो है? No, this train is actually moving like really fast. Just 250 का meal नहीं हो सकता यार. India है ये, पाकिस्तान नहीं है. मुझे लग रहा है just like cozy its way along India. But कुछ आप लोग बताइए. टिकट में तो मेरा टिकट के अलग से टिकट के अलग पैसे होंगे. मुझे लग रहा है 250 बस दिल्ली टू मुंबई है ना ये. मुझे लग रहा है आगरा. non-bullet दिल्ली train. टू आगरा. दिल्ली टू आगरा है. तो आप लोग बताइए. And in case you're wondering how to book a train in India, it's actually pretty simple. ये मुझे You लग just रहा get है it यहाँ all इनका online. है You go to the website. ट्रेन की तरफ से मिला ना. ये दिखा रहे हैं. That's like their official Indian Railways website. From there, you first have to register if you've never done this before. You register online, you get like a user ID, and then after you get your user ID, you can then start making bookings on their booking system. You don't need a user ID to see train availability, but you're going to need that if you want to make any bookings. Although this website is where you used to register, we didn't actually book our trip there just because we were having troubles with the credit cards and like paying for the train that we were looking at online. So we went to this website called 𝐂𝐲𝐺𝐻, and that was a lot better at being able to accept our credit cards. Oh, and one more thing before I मतलब कि वो forget. just Our meal tickets from Delhi to Agra, one way was 2,500 rupees for the India two of में us ज़्यादा है in यार. the first class or like executive class, top tier of this train. For what you get, a very comfortable ride and a quick ride to Agra where Taj Mahal is, I think it's actually really, really good price. और मुझे इस लॉक से बहुत डर लगता है. हाँ कि लॉक ही मतलब खुले ही ना फिर. We have successfully made it into the washroom. So let's look around. What do we have? We have, look at that, a Western style toilet, a spot for यार easy covers, साफ है भाई. partially Neat and done, clean है. a window. That's actually pretty nice. Sink with running water. And look at this, toilet paper. Awesome. The mirror. There's a light space and it about works. And there's hooks if you bring your bags in. And of course a door lock. It's a small space, but not bad. I can't believe this. We're like almost there. This has just felt so fast. And it's been a really smooth journey. Really nice journey. The only trouble is we don't know how to disembark. I haven't seen other people disembark. I don't know if like the train keeps going. Like we think this is just gonna be a stop and the train's gonna keep going. So we think we like have to just like book it off the train in time that we don't get stuck on here until the next station. So we'll be fine. बड़ी जल्दी स्टेशन आ गया.
ये मुझे लग रहा है टूरिस्ट है। हाँ, वो भी अपनी सीट को बाय करके जा रही है। We're here! That was a well-timed little sound. Welcome to Agra. से आगरा है ताजमहल Now we're घूमने के gonna लिए। see if we can find a way out of this train station, grab a taxi. Yeah, and hopefully check into a hotel. Sounds like we're playing a video game. Ah, yes, let the taxi hustlers begin. We hate getting out of a bus station or a train station because usually you're just swarmed by people. Normally what we try to do is get an Uber nearby or like leave the station a little bit and then see if we can get a taxi because usually the rates outside of the station are much better than inside. Can you guys see how many people are following me? Oh, Nicole's been already been spoken to. 200 rupees together any hotel in Agra. Okay, so Is that This is really the tough part when you get out of like a taxi drivers है station या and you बस get में? swarmed. It's just you can't really think. It's like really hard to like think about what to do next or where to go and navigate and like try not to get hit. But it looks like Nicole found an Uber and it looks like we just have to get picked up from outside the station. The prices are like can be like quite different from a local like उनको Uber ही लेनी double or चाहिए। triple. So that's why we usually do Taxi Uber तो because Uber you're just like ज़्यादा है less ना। likely to get overcharged. पता नहीं टैक्सी थी या रिक्शा से। This could be very overwhelming. You're not used to it, but we've gotten a little bit more accustomed to this. Uber होगा All right. ये Okay, Uber? so originally tried to take हाँ an Uber. Uber पे रिक्शा भी होते हैं। Because, Uber पे रिक्शा usually भी it's a little bit हाँ, easier. रिक्शा भी है, The बाइक Uber भी was है। 150, वो तो and then बाइक these का guys in the पता tuk नहीं trucks were offering it for रिक्शा Uber 100. से रिक्शा भी चलते हैं। so while we were ठीक like है, going through a ton of 150 traffic trying to रिक्शा find के प्राइस है Uber, 200। which was turned into this truck stop, I swear we saw this man like he looked like he was in like police uniform or military uniform. I think police, and he had like a really pointy like thick like almost like a needle like It's like a screwdriver. Yeah, like kind of like a screwdriver, and he punctured one of the like back tires of one of the truck trucks. I like heard the air hiss out of this tire. I don't know why. Is it that like that truck truck's not allowed to be running or they weren't listening to him? I have no idea. But it was very strange. Just like all of a sudden he was like आप भी बताइएगा कि puncturing क्यों this किया। tire. I thought that like after we leave the train station, like we can get some peace and calm and a ride to our hotel. Nope. पंचर पता नहीं इनका don't get रिक्शा any था of किसी that और का था। We made it. I don't know if you guys heard that, but he's definitely trying to get us to go to a different hotel, which we've heard is like a super common scam, unfortunately, here. Some people tell you your hotel is closed, or that it like doesn't exist anymore, and so they'll take you to different ones. He was trying to ask how much are we paying per night. Your room, how much you budget? Oh, I'm not sure. It's it's okay. We do want to stay there. Oh, yeah. And then like there are better ones, there are newer ones, there are closer ones. This one's on a noisy street. ये सारी बातें अपने टैक्सी ड्राइवर की बता रही है ना कि उसने इसलिए बोली। All sorts of things to make us go somewhere else. So he just kept saying like, oh, अच्छा मतलब टैक्सी ड्राइवर उसको इसलिए पूछा था कि वो किसी और होटल में ले जाए उसको। उन्होंने होटल वालों के साथ उन्होंने कमीशन किया हुआ है। पहले उसने सारी बुराइयां की ना दैट वाज सो नॉइजी। हाँ ये है वो ओल्ड है ये अच्छा नहीं है। Thanks so much for watching our very जिनके साथ first कमीशन video किया होगा उस on होटल the के पास very लेके जा रहे first हैं। Indian train ride. First of मतलब वो many. देख लेते हैं ना कि ये अननोन है या इस मुल्क के नहीं है टूरिस्ट हैं तो इनको जो है ना वो उन्होंने वो वाकई वो ताजमहल में The next one. Thanks for watching. नहीं इससे पता है क्या वो ये जो टैक्सी जैसे वो थे जैसे अभी हमने देखा जैसे ये स्टेशन पे उतरे हैं तो हर कोई टैक्सी ड्राइवर जो है इनके पास आ रहा था कि हम ले जाते हैं तो ऐसे होटल वालों ने जो है मतलब ऐसी प्लेसेस पे जो है जाहिर बात है लोगों को मालूम है कि वो रिक्शा करेंगे या टैक्सी करेंगे तो होटल वालों ने उन लोगों के साथ भी कमीशन डील की होती है ना कि आप हमारे पास इतने कस्टमर लेके आओगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे तो इस तो जाहिर सी बात है सब अपना अपना फायदा ही सोचते हैं। तो खैर ये वैसे हर जगह पे होता है जो पीछे भागते हैं नहीं जो पीछे भागते हैं ऐसे रिक्शे वाले या वो मतलब जहाँ पे भी किसी स्टेशन पे भी उतरो ना क्योंकि उनको पता होता है कि अब इन्होंने जाना है आगे कोई किसी होटल में ही जाना है और कोई टैक्सी लेके जाना है या कोई रिक्शे वाले जो होते हैं कि भाई इन्होंने रिक्शा यूज करना है तो वो ऐसे पीछे पीछे
घूमते हैं सबके, और इस तरीके के जो मतलब फॉरेनर्स देखते हैं उनकी लुक के भाई ये इंडियन नहीं है, या ये किसी भी मुल्क की लगा लो कि ये हमारे मुल्क के नहीं है, तो उनके पीछे ज्यादा भागते हैं या ज्यादा करते हैं कि भाई इनको पता नहीं है यहाँ के किरायों का, इनसे ज्यादा किराया भी ले लेंगे। और मुझे ये भी एक बात लगती है, और दूसरी बात ये भी कि जैसे आपने कहा कि फॉरेनर्स के साथ, मुझे लगता है कि इंडियंस के साथ भी ऐसे करते होंगे। मतलब अब जैसे हम लोग कभी कराची नहीं गए, लेकिन अब अगर आप किसी अननोन सिटी में जाओ ना, अपने ही कंट्री के किसी अननोन सिटी में जाओ, तो वहाँ के लोग आपको पहचान लेते कि आप इस सिटी से नहीं हो, तो तब भी वो उन लोगों के साथ भी ये जो है, क्योंकि उनको तो नहीं मालूम यहाँ के किराए वगैरह का, यहाँ कितना किराया लगेगा, इतना मतलब कितने डिस्टेंस पे इतना किराया लगेगा, हमारी दिहाड़ी बन जाएगी। अच्छा, मुझे ये पता था कि मतलब मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, ये रिक्शा या टैक्सी वालों को, कि वो लोगों के पीछे पीछे भागती हैं, लेकिन उसके पीछे ये रीजन थी, मुझे ये वीडियो देख के आप पता चली है। नहीं वो मुझे तो पता था, जाहिर सी बात थी। हाँ, ये कमीशन वाली कमीशन नहीं, होटल्स का नहीं, मतलब जैसे वैसे भी हम किसी और सिटी में जाते हैं तो हम कोई रिक्शा वगैरह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ज़रा हर टाइम पे हम लोग गाड़ी में नहीं सफर कर रहे होते, हमें लोकल भी सफर करना पड़ता है, और फिर वहां जाके जब हम कोई ऐसी चीज लेते हैं, कोई टैक्सी या रिक्शा वगैरह, तो जाहिर सी बात उनको पता चलता है भाई ये दूसरे सिटी से तो उनसे पैसे ज्यादा लेते हैं, तो इसका तो मुझे पता था। हाँ, नहीं कमीशन की बात करें कि मुझे ये नहीं मालूम था, ये तो मुझे होटल वालों के साथ कमीशन होता है। खैर बहुत भड़काया वगैरह भी उस होटल के बारे में। और देखो मतलब अपनी कंट्री का इमेज खराब करने की बात है ना। अब वो होटल में जाके बता रही थी कि मतलब खुद से अपना बता रही थी कि ड्राइवर ने जो है वो उसको इस होटल के बारे में क्या क्या बोला कि बैड है, ओल्ड है, नॉइजी है, इस किस्म की बातें बोले कि यहाँ पे नहीं, जिस होटल के साथ उसका कमीशन हुआ था वहां पे लेके जाने की कोशिश की, तो आपको मुझे बैड इंप्रेशन भी पड़ता है ना, ये भी बात। और मुझे लग रहा है ये भी इनके अपने कॉन्सेप्ट ही थे, मे बी ये सही था या नहीं सही है, क्योंकि इनको भी कंफर्म तो नहीं है ना, ये अपने ही कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं जो उन्होंने, वो उनकी बातें सुन के जो उन्होंने समझा, लेकिन अगर तो वो वाकई इस तरह से कर रहा था तो वाकई ये गलत बात है। और दूसरा ये कि वो जो पुलिस वाले ने वो रिक्शा रोका हुआ था कि रिक्शे की को पंक्चर है, तो वो ये पूछ रही थी कि क्यों उन्होंने रोका, तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कि क्या वो वही वाले बात के वो जो ट्रैफिक पुलिस होती है कि हमारी दिहाड़ी बन जाए तो इस वजह से रोका है, या वाकई ही उसका पंक्चर हुई हुई थी, तो इस वजह से सेफ्टी के लिए रोका कि भाई पंक्चर है, कुछ भी हो सकता है आगे रिक्शा उल्टे रहते सेफ्टी के लिए नहीं रोका होगा। भाई हर के बैड भी हैं और अच्छे भी हैं, तो ये आप लोग बताइए। लेकिन ज्यादातर जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसका बैड ही इमेज होता है, हाँ, कि वो ऐसी फजूल में चालान कर लेगी या बिला वजह आपको जो है वो किसी रीजन से रोक लेगी अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए। तो इंडिया वालों अब ये कमेंट ना करना कि हमारे यहाँ की पुलिस ऐसी नहीं है। हर जगह पुलिस जो है वो अच्छे भी होती है, बुरे भी होते हैं, और खासतौर पे फॉरेनर्स को देखे तो आपको पता होता है कि अच्छा इनके पास अच्छा खासा माल है, तो किसी ना किसी तरीके से जो है इनको लूटा जाए। ऐसे हमने काफी सारी इंडियन मूवीज में भी देखा है। अब ये मत आप लोग बाकी वो वाली बात कहना कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा होता है। खैर एक्सप्रेस पे आते हैं भाई, बहुत अच्छा जबरदस्त लगा। वॉशरूम ट्रेन थी, वॉशरूम मुझे बहुत अच्छी लगी, और दूसरा ये कि बैठने की जो सिटिंग थी वो बहुत जबरदस्त मुझे लगी, मतलब टेक लगा के आप आराम से बैठ सकते हो, और 5 to 3 इंच उसने अपनी हाइट बताई थी आई थिंक, तो मतलब वो बंदा भी आराम से जो है वो अपने पाँव भी खोल सकता है और आराम से बैठ सकता है, रखने के लिए वो तो खेल रही थी ऊपर कंफर्टेबल था। फिर वो जो आपके सामने खुल जाता है जिधर आप अपना लंच वगैरह या कुछ भी अपना स्नैक वगैरह रख सकते हो। और अच्छा वो टिकट के जो हम बात भी कर रहे थे वीडियो में देखते हुए कि एक्स्ट्रा उन्होंने पैसे लिए थे, आपकी मर्जी है अगर आप पे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। और ये भी लाजमी बताना कि दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस कितना है, और जो किराया इतना ज्यादा था। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर तो कम है तो फिर लोग तो ये अवेल नहीं करते होंगे कि क्या करना है, थोड़े से स्नैक रख लेते हैं, जैसे उन्होंने भी स्नैक रखे थे, लेकिन ज़ाहिर वो टूरिस्ट थे, वो उन्होंने तो देखना था कि क्या है क्या, उन्होंने तो वो करना था, जाहिर सी बात है। मुझे तो टूरिस्ट ही लग रहे थे, आप लोग बताइए होंगे, हम लोग इनके चैनल को फॉलो नहीं करते, इसलिए पता नहीं है कि ये टूरिस्ट हैं या क्या है। और मुझे भी लग रहा है इसीलिए शायद ट्रेन में ऑप्शन था कि मतलब कम शायद डिस्टेंस होगा, इसलिए ऑप्शन उन्होंने रखा होगा कि मतलब ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कोई आपके लिए जरूरी नहीं है। तो खैर स्नैक्स तो काफी लग रहे थे, और मुझे उनकी जो वो सर्विस है ना वो मुझे अच्छी लगी, जैसे वो पानी भी सर्व किया, वो फ्री था, पानी और गिलास आपका फ्री था। और फिर जो उन्होंने जो खाना था, खाना टाइप का, वो जो उन्होंने सर्व किया, और फिर ट्रेज वापस भी लेके गए, तो मुझे उनकी सर्विस अच्छी लगी। दूसरा ये कि नीटनेस थी, नीट बहुत था, वॉशरूम वगैरह भी बहुत साफ सुथरा था, ये नहीं कि भाई गंदा बंदा इस तरह का, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और ऊपर स्पेस भी बहुत थी, सामान रखने के लिए जो था वो ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस थी। और दूसरा वो बोल भी रही थी कि मतलब फास्ट चल रही है ट्रेन, फास्ट है, तो ये भी वो बोल रही थी। और हमने वो उनमें भी तो देखा था कि गतिमान जो है वो फास्टेस्ट ट्रेन है, और उनका जो स्टेशन था दिल्ली का स्टेशन था वो भी बहुत जो है वो
साफ सुथरा था और अच्छा बड़ा था, और वो उन्होंने कहा भी था कि मतलब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि आपको जो है वो समझने में जो है वो आसानियों के वो तो context से ऑब्वियसली हाँ, होता होती है क्योंकि वो टूरिज्म के लिए टूरिस्ट के लिए आसानी रहती है ना। खैर मुझे तो बेहद मजा आया, मुझे हम भी लोग को बहुत बहुत ज्यादा मजा आया देखने का, और अच्छा लगा इनका चैनल भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, और जल्दी से अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं दोबारा से कह रहे हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को भी लाइक जरूर किया करें। हाँ, और कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।